Good morning, dear students. Myself, Bhartiyandu, lecturer in chemistry from BTC Government Girls Model Senior Secondary School, Nurpur, welcomes you all in our today's topic of electrochemistry, primary cells. I hope you will enjoy the topic. Before I proceed, I want to thank RMS Himachal Pradesh and Directorate of Higher Education Shimla for providing me the opportunity to present my topic in front of you. So let us start the topic, the primary cell. Let us start with our today's topic. As you very well know that our today's topic is commercial batteries. So let us start with the topic. See, these batteries and cells are the application of electrochemistry. One of the main use of galvanic cell is the generation of electric energy. The series combination of two or more cells are called as battery. A battery is an arrangement of electrochemical cells that can be used as source of direct current at a constant voltage, and it is based upon the principle of redox reaction. While we prepare the cell or a battery, some characteristics should be there in a battery so that it can be used as commercial battery. It should be light, it should have reasonable long life, both when it is in use and when it is not in use. And the third one is the voltage of the battery should not vary to a large extent when it use. देखिए, जब हम कमर्शियल बैटरीज की प्रोडक्शन करते हैं, अर्थात इसको बाजार में बेचने के लिए प्रिपेयर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. ये हर तरह के इंस्ट्रूमेंट में फिट होनी चाहिए. इनका साइज और इनका वेट हल्का और कम होना चाहिए. इनकी लाइफ जब ये यूज में हो, किसी इक्विपमेंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो तब, और जब ये शेल्फ में रखी हो अर्थात जब इसको हमने स्टोर किया हो, तो दोनों की केसेस में इसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए. और तीसरी बात, जब ये यूज में हो और काफ़ी दिनों से यूज में आ रही हो, तो इसकी वोल्टेज में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सेल और बैटरी. In the market, we have two commercial batteries available. One is called as primary cell or primary battery, and second is called as secondary batteries or the accumulators. See, the primary cells or primary batteries are non-rechargeable, so they are use and throw type of cells. That is, after using for long time, when they becomes dead, they are not recharged again. Whereas the secondary cells, also called as accumulator, although this accumulator word is not suitable because we can only store the current for some time. That is, it is a temporary accumulation or the storage of charge or current inside the battery. So these are secondary batteries. The dry cell which we use in our day-to-day equipments is the example of primary cell, whereas the batteries present in our all automobile, that is lead acid accumulator, is an example of secondary batteries. Let us discuss the dry cell first. See, the raw material, the method of construction and reaction for the construction of dry cell. Main requirement for the construction of dry cell are zinc container which will act as the anode, graphite rod which will act as the cathode, brass cap, then we require a leak proof seal and powdered
manganese dioxide plus carbon, a paste of ammonium chloride and zinc chloride, and we require one cardboard or paper to cover it so that it may not leak. In the construction of dry cell, zinc container will act as anode, whereas the graphite rod will act as cathode. Zinc container will act as negative charge terminal, whereas carbon or graphite rod capped with brass cap will act as the positive charge cathode. The main electrolyte of dry cells are of two substances. One is in the form of powdered manganese dioxide and carbon, and other is in the form of a paste which consists of ammonium chloride and zinc chloride. See, ड्राई सेल में ये दो मेन इलेक्ट्रोलाइट हमारे अवेलेबल होते हैं. मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड के साथ डायरेक्टली टच होता है. The paste of ammonium chloride and zinc chloride is outside to the powdered manganese dioxide and carbon. It is in direct contact with the zinc container. And see, while reaction takes place, ammonium ions move from this paste and manganese dioxide moves from the central place, and the redox reaction takes place spontaneously. So these were the raw materials and the arrangement of various substances in the dry cell. Now let us see the reactions taking place in the dry cell. So this was the construction and the arrangement of dry cell. Now let us see about the reactions taking place inside the dry cell. हमें पता है ड्राई सेल में जिंक कंटेनर एनोड एक्ट करेगा जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, जबकि ग्रेफाइट रॉड कैथोड एक्ट करेगी जिसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होगा. During the oxidation process, zinc will lose its 2 electron and will form zinc 2 positive ions, whereas during the reduction reaction at cathode, ammonium ion combines with the manganese dioxide and will gain 2 electron, and they will form a complex MnOOH, and ammonia gas is released. So in the overall reaction, when zinc combines with the 2 ammonium ion and the powdered manganese dioxide, it forms zinc ions and ammonia gas is released during this reaction. See, हम जब बहुत लंबे समय तक इन सेल को यूज करते हैं और जब ये सेल डेड हो जाते हैं तो वो सेल फूल इसीलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर अमोनिया गैस सिंथेसाइज होती है, और क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का कुछ पेस्ट जो बीच में रह जाता है वो लीक हो सकता है. तो जब कभी सेल फूल जाता है तो हम उसे तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट से बाहर निकाल देते हैं. So this was the construction and reactions involving dry cell. The current given by the dry cell is in the range of 1.2 to 1.5 volt. See, the dry cells are the common and versatile batteries used in the electronic equipments these days. These are available in various size. आपने देखा होगा उनके ऊपर A, A2, A3, A4 लिखा होता है. तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हमारे इक्विपमेंट्स गैजेट्स हैं इसके अंदर ड्राई सेल यूज किया जा सकता है. सबसे बड़ी इसकी एक ही कमी है ड्राई बैक है. आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज व्हेन बैटरी बिकम्स डेड, हमें इसे तुरंत इक्विपमेंट में से रिमूव कर देना चाहिए. जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिंक कंटेनर की ऑक्सीडेशन होकर के इसके अंदर छोटे छोटे छेद क्रिएट हो जाते हैं जिसमें से अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लीक कर सकता है, क्योंकि अमोनिया गैस भी इस रिएक्शन में बनती है जिसके कारण सेल फूल जाता है. तो दोनों कंबाइंड इफेक्ट के कारण ये सेल बरसात में या लंबे समय के बाद इक्विपमेंट के अंदर ही लीक हो सकता है. सो वी हैव टू रिमूव द डेड बैटरीज इमीडिएटली when they are noticed. So this was all for today. I hope
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, YouTube पर इसे जरूर सब्सक्राइब शेयर करें। इससे पहले कि मैं अपनी बात को खत्म करूं, आई वुड लाइक टू थैंक्स RMSA हिमाचल प्रदेश, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन शिमला, BTC के मेरे स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल मैडम श्रीमती चंद्ररेखा जी, देवेंद्र सर, संदीप सर, मुकेश जी, गगन जी, विपन जी, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वैल्यूएबल सजेशंस एंड वैल्यूएबल फीडबैक दिए so that I can improve my videos and can provide you a good videos. Thank you and have a nice day.